For joining us. Just to very quickly introduce him, he's currently a PhD candidate in the United Nations University Institute of Advanced Studies, Tokyo. But other than that, I think यहाँ काफी लोग हैं who already knows him from the past experience, past workshops, past consultation, because he has served in Pakistan energy modeling, जहाँ से हमारी mainly शुरू हुई. तो he has been engaging since that time from 2007 in the first integrated energy plan of Pakistan. उस time पे जो that was led by the planning commission. But he's again energy specialist, a policy analyst, one of the key energy modelers of Pakistan, and not just energy, but also looking a lot very closely at the climate change modeling. And so, prior to his PhD work, he has also worked at the Energy Planning and Research Center under the Planning Commission, where he has led the work on a team of implementing integrated energy planning in Pakistan. He has also worked with International Food Policy Research Institute, IFPRI, which has also been a very close partner of SDPI formerly as well. So that's again a quick introduction, but I think Salsa will later introduce him a bit if he wants to a bit more as well. But before going to Salsa and round of introduction, let me come to Ahad Nazir Saab. Ahad Saab is currently an associate fellow and also heads two center. One is the Center for Learning and Development and the Center of Private Sector Engagement at STPF. So Ahad Saab, over to you. Yeah, thank you very much and welcome, Saad Saab. It's good to see you. I think after around 1.5 years. तो मेनली जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो यही है कि आपके हम हमेशा SDPI में एनर्जी को एक सेपरेट डोमेन नहीं लेते. हम एनर्जी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट नेक्सस की बात करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस नेक्सस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास मॉडलिंग कैपेबिलिटीज़, मॉडलिंग के तरीक़ेकार, मॉडलिंग में किसको इनपुट लेना है, किसको आउटपुट लेना है, इनके बारे में हमारे पास क्लैरिटी हो. एंड अगेन एनर्जी सेक्टर के इश्यूज, चाहे वो एनर्जी हो या पावर हो, यही अगर हम डिनोमिनेशन रखें तो इश्यूज दोनों में तकरीबन सेम है. पहला आपका अवेलेबिलिटी का इशू है, दूसरा अफोर्डेबिलिटी का, तीसरा शायद सस्टेनेबिलिटी का. और इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक मतलब एक ज़्यादा होलिस्टिक तरीक़ेकार से बात कर सकें. हमारे पास बहुत सारी मॉडलिंग ऑलरेडी होती है IG की फॉर्म में, अब TSAP हो गया, बट आई थिंक क्योंकि उसके अंदर आपका एक पूरा एनर्जी का एस्पेक्ट मिस आउट हो जाता है विच इज़ नॉट पावर, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं कर पाता जो मॉडलिंग वो करनी चाहिए, और उस तरह से इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी नहीं हो पाती. इसके अंदर जो एक ज़माने में मैं भी मॉडलिंग करता था, तो अब नहीं करता, लेकिन फिर भी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारे बड़ों ने हमें दी उसके अंदर यही है कि आपके इनपुट्स की जो चॉइस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. और आई थिंक साथ से पहले भी हमारी इस बात पे डिस्कशन हुई है और इनके माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स उस मामले में बहुत अच्छे हैं. एंड सेकेंडली द चॉइस ऑफ आउटपुट्स. जब हम पॉलिसी लेवल की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे यंगस्टर बैठे हुए हैं, तो पॉलिसी में हमने ये चीज़ देखनी है कि एपिटाइट किस चीज़ की है. कोई भी इस चीज़ में आपके टेक्निकल वेरिएबल्स में शायद कोई भी पॉलिसी मेकर इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको किसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, एक्सपोर्ट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, जॉब क्रिएशन के साथ, ऐसे किसी वेरिएबल्स के साथ अपने मॉडल्स को की आउटपुट को आप इंटीग्रेट कर सकें तो ऑटोमेटिकली उनकी अटेंशन जो है वो आप गेन कर लेते हैं. जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज स्पेशली जो टेक्निकल साइड ऑफ पॉलिसी रिसर्च है उसके अंदर हमें आता है. तो ये इंटीग्रेटेड एनर्जी मॉडलिंग में हम पहले भी साथ से सीखते रहे हैं. इसके अंदर ओवरऑल अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो आपकी प्लानिंग बेहतर हो जाएगी. एनर्जी सेक्टर में थोड़े प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग की वजह से आई थिंक बहुत सारा पाकिस्तान ने लॉस किया है. और वो जो हमारा बेसिक हाइपोथेसिस है कि आपका एनर्जी सेक्टर में डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, जो नहीं हो पा रहा, वो आपकी फिर ऑटोमेटिकली वो असम्पशन ट्रू हो जाएगी. क्योंकि आपका वो जो हम कभी उसको कह देते हैं कि जी डोमेस्टिक हमारी यूजेज ज़्यादा है, कमर्शियल कम है, इंडस्ट्रियल कम है, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अगर हम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग में जाते हैं तो वो उस तरह के सिनारियोज हम खुद देख के और उसके मुताबिक हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन ये पिछले NDCs जब बन रहे थे तो उसके अंदर कोई मॉडलिंग इन्वॉल्व नहीं हुई थी. दैट वाज ओनली क्वालिटेटिव डाटा
कि किसी ने कह दिया 30% रिन्यूएबल्स कर दो, किसी ने कह दिया कि इतने ईवीज कर दो तो उतने हो गए। तो उसके पीछे अगर मॉडलिंग हुई होती तो वो ऑटोमेटिकली वही जो सवाल अब हम पूछ रहे हैं कि ईवीज आएंगी तो उनको चार्ज करने के लिए बिजली कहाँ से पैदा होगी, तो वो आई थिंक वो पहले ही हमारे हो चुके होते हैं। और इस तरह के सिनारियोज बनाना ही मॉडलर का मेन काम है। लेकिन सिर्फ मेरी जो उबैद से भी अक्सर डिस्कशन होती रहती है वो यही है कि हमारे आउटपुट वेरिएबल्स आई थिंक उन पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप के साथ साथ से आज हमें सीखने का मौका मिलेगा जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आई थिंक एक थोड़ा सा वेरी क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन कि आपको भी थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हु इज सिटिंग हियर इन द टेबल, बट आई थिंक फर्स्ट आप इफ यू कैन वांट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you everyone. My name is Saad and I am currently PhD candidate in United Nations University, and my PhD in sustainability science, but more particularly towards Paris Agreement implementation. United Nations University announced Paris Agreement specialization at the COP conference in 2021, and I am one of the first batch at United Nations University where we are basically like I'm one of the first PhD at United Nations University, and then there are 3 master students for Paris Agreement specialization. So this is one kind of unique program right now. And I think already Ubaid briefly introduced about my past experience, but it helps me when I started this PhD that how we can actually link energy planning and climate. So I will talk about it later, and thank you. थैंक यू जी। तो बाकी साथ साथ हमारी भी कोशिश यही थी कि जो लोग स्पेशली एनर्जी टीम के अंदर काम करें या अराउंड क्लाइमेट के काम करें एसटीपीआई में भी, एंड देन फ्यू ऑफ द कम गेस्ट हमारे पास एक्सटर्नल भी है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट हिम टू ब्रीफली very briefly introduce themselves, starting from Sathi. Okay, thank you so much. I'm Sadia Sati and I'm working with Energy Unit as a Gender and Climate Specialist. जी थैंक यू। मेरा नाम उबैद है। मैं भी आई एम वर्किंग इन द एनर्जी यूनिट एंड आई हैव बीन डेवलपिंग द डिफरेंट मॉडल्स। वो लीप मॉडल्स हो जाएं, टाइम्स के ऊपर इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट दे हैव बीन डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन डेवलपिंग। Assalamu alaikum. I'm Zainab Baba. I'm working here as a research associate. From past 3-4 years, I basically work on energy modeling and forecasting using different softwares like Leap and Amos. So very much looking forward to your lecture today. I'm Aisha Naeem and I'm working as a research assistant in the energy unit. I'm Arfa Jaz. I'm an environmental engineer and I'm working as a research assistant here at SDPI in the energy unit. Assalamualaikum. I'm Sarim Zai and working as a research assistant at STPI in Energy Unit. I'm Ali Ahmed, Associate Coordinator, Digital Resources at STPI. Assalamualaikum. My name is Umar. I'm working as a research associate in Energy Unit of STPI and my expertise in energy markets. Assalamualaikum. This is Ehtisham Ulhaq, working as a research assistant and ecological sustainability and circular economy unit at STPI. Assalamualaikum. Ahad Nazir from STPI. Assalamualaikum. My name is Liaquat Masri and I'm head of operations at Youth Development Association. Though I don't have any experience of working in a scientifically as you guys are doing, but I have experience of working in disaster management almost all over Pakistan and organic farming and biogas models. I'm monitoring all that project. Thank you. Yes, a very good morning. I'm Sylvia Shimon and I'm the social mobilizer at Youth Development Association. And along with this, I'm also working in climate change. Thank you. I'm Lurtu Nayagam. Actually, it's a difficult name. It's a Sri Lankan name. I have been working in the field of education in Pakistan for last 30 years, but for last few months, I have been associated with the Youth YDA as a program manager. Thank you.
I'm Tarid Insa, I'm a working journalist, and then STPI, I run STD. Ji, thank you. So, yeah. My name is Mohammed Ashar, and I am a semester student of BS Government Policy attending and also a part of the board. My name is Asad Ali. I'm a photographer and work at SCT. Thank you. Thank you so much. So I think with this we can, yeah, कोई और जुनेद नहीं नजर नहीं आ रहा Thank you. Ali bhai, sorry मैं पीछे देख नहीं पा रहा चलिए thank you जी. So I think with this we can Saad Saab, it's the floor is yours and we look forward to your interventions. बस my Okay, thank you, everyone. First of all, I would really thanks to SDPI for hosting this lecture, and special thanks to Ubaid because I requested him that I wanted to share some thoughts with you through this lecture. And obviously, I'm looking forward to your valuable comments and feedback. So it's a mutual learning process. So I'm really looking forward for your comments. So the topic of my presentation is integrated energy planning towards climate change mitigation and air quality in Pakistan. Let me give you a brief plan of presentation. Here is a plan of presentation. I will talk about introduction, literature review, proposed research, conceptual framework, and obviously significance of the study. And then there is a comprehensive example of my work from the residential sector. So let me give you a brief background. What was the motivation to develop this proposal for my PhD project? So basically, average global temperature already reached the level where it is leading towards extreme weather events, and we have witnessed it is in Pakistan as well. So Pakistan ranked as among the top 10 most affected countries in the world. From the energy point of view, fossil fuels remained historically dominant with around 80% of the world's consumption. So according to International Energy Agency, inclusive actions and effective policies for the energy sectors are required to meet global warming targets. So through this research project, I would like to aim to develop IEP for energy security and the Paris Agreement implementation in Pakistan. Let me give you a brief conceptual understanding. Although Ahad Saab already briefly discussed points about integrated energy planning, but for our larger audience, it is important to understand what is IEP. So basically, we have three planning tiers. First is operational planning tier. Operational planning means day-to-day operational activities. And this planning is basically supposed to provide delivery of supplies like electricity supply, gas supply, and mainly planning horizon is of almost 1 year, short term. Then we have medium term planning, which is actually expansion planning. For example, grid planning, expansion planning, and this is mostly 5 to 10 years. We are already doing relatively better, or we are quite efficient in terms of operational and mid-term planning. But the integrated energy planning basically we lack in Pakistan because integrated energy planning is beyond 10 years. It's for the long term. So the objective of this planning is to achieve strategic and policy objectives. The concept was introduced by IEA in 1970s. Initially, the concept was only introduced for the IEP for the planning within energy sector only. But recently, it is also linked with the climate action plan. So according to NDC synthesis report in 2023, 28% of parties use IEP modeling tools to estimate emissions from their baseline level to align with Paris Agreement targets while they submitted their NDC documents. So IEP approach is critical not only for achieving energy security, but also achieving climate action plan. Let me give you a brief historical background of government initiatives for energy planning in Pakistan. We started energy planning based on some modeling tools in 1988. That was first model based on RESPAC model.
and the approach was optimization planning framework model. This plan was developed from 1988 to 2013. So that was like a first IEP IP-based document. Later on, there are several efforts made, but one of the most comprehensive effort was made in 2007 to 2010. First time we utilized proper IP tool, that was Markle Times, but unfortunately that effort was not continued later on after the completion of that project because it was like a project exercise. In between, there are different other planning documents, but focus mainly remained on power sector. There are some reasons why focus mainly remained on power sector, because we face severe load shedding and shortfalls in power sector. So our policymakers, they mainly focus on the power sector planning. But in 2019, Planning Commission again recognized the importance of integrated energy planning. And when we are talking about integrated energy planning, it is not only for the planning horizon, it is also for the overall energy planning, not only for electricity planning. So EPRC, Energy Planning and Resource Center, was established in Planning Commission in 2021. I was part of that team and we developed 2 reports in 2021 and 2022. That was Pakistan Energy Outlook. So after a very long time, we try to develop energy outlook report. That is initially we develop it for the 10 years, and then the plan was that we will further work on it. We will further improve this document. And then we have one of the official document, IGSAP, in the power sector. This is one of the official document where all the stakeholders has a consensus for power sector planning. So these are the government initiatives. But unfortunately, some of the efforts, they were not continued. And then the missing part is energy planning linkages with the climate action plan. So we develop energy plans, but there is no linkages with the climate action plan. I will explain this point later on, but let me give overall energy sector overview for our audience. Electricity is only 16% of the final energy consumption. Electrification of various sectors of economy is still underway. So like developed countries, we cannot survive if we only focus on electricity. We need to focus on overall energy planning beyond the power sector. So this is our country's power generation: 60% thermal, remaining 40% from hydel, nuclear, and renewable energy. So here are a few problem statements. I will just reiterate all the points I discussed right now. So like I said, energy shortfall, particularly power outages, have had a significant impact on Pakistan's socio-economic stability over the last few decades. And energy shortfall led to focus primarily on the power generation and supply side interventions. So as a result, power generation increased by 20,000 megawatt from 2012 to in 2013. So we have limited perspective, long-term perspective for the energy planning, and we mainly focus on short-term needs. And then our long-term plans were developed mainly for the power sector. One of the example is IGSAP. So there is also energy planning lag the connection to climate action plan. So it also affects towards our Paris Agreement implementation. So the challenges are related to clean energy transition and implementation of Paris Agreement. Let me give you a brief background of our GHG emissions. So Pakistan GHG emission nearly doubled from 1994 to 2018. And energy sector is one of the largest contributor, closely followed by the agriculture sector. And air quality in Pakistan is frequently rated as unhealthy. So, like, what are our NDC commitments which were updated in 2021, mainly for the energy sector? So energy sector mainly discuss about the mitigation actions. So first of the action was renewable energy share. We will increase 60% of all energy produced in the country by 2030 based on the renewable energy sources. And then the second commitment was that there will be no new imported coal-based power plant
since 2020. And then we also committed for the 30% of all new vehicles sold in Pakistan by 2030 will be based on electrical vehicles. So these actions are not based on IEP modeling approach. Instead, they focus solely on power system planning, electrical vehicles in the transport sector. So the issue is that we did not develop our plan for the mitigation for the energy sector based on any IEP modeling tool. And then our overall commitment is that we will reduce 50% of GHG emission by 2030 in our NDC commitment. So through this project, what is the main objective? That to evaluate scenarios for the energy sector to achieve NDC target by 2030 and net zero GHG emission within energy sector, and then to develop IEP framework in Pakistan. So to develop a comprehensive research proposal, there is a need of proper literature review. So I started with the systematic literature review, and there are 3 questions. So first question was, what are existing global practices of IEP to achieve energy security and the Paris Agreement goal? And the second question was, what is the research gap in Pakistan compared to the context of global practices of IEP? And the last question was, what are the key challenges in Pakistan energy planning and how can IEP be effective in addressing these challenges? So here is a brief overview of the literature. So energy planning is aligned with the Paris Agreement in global studies. Globally, studies aligned towards Paris Agreement goals. Our focus mainly on the supply side planning, and these studies are based on some tools such as optimization tool, simulation model, econometric model, etc. Integrated energy planning also linked with the climate change mitigation, and energy model utilize bottom-up approach. I will talk about this bottom-up approach later to evaluate the impact of various case scenarios. And a review of global studies also support that there is need of country-specific IEP approach. However, when I conducted a literature review more specifically from the Pakistan related, so we not only lack in the terms of government side planning, but unfortunately our academia, our research also lack the connection with the climate action plan and energy planning. And then also focus, mainly literature also focus on the power sector. So there is limited literature on IEP, and we also lack a bottom-up approach. Why it is important, we will talk about it later. And then there is limited literature on energy planning and its linkages with climate action plan. So studies generally focus on supply side and power system planning. Here are some examples of IEP implementation by countries while they submitted their NDC documents. So first 4 examples are from the developed countries. For example, European Union, USA, United Kingdom, Canada. They utilize different IEP tools such as energy plan, economy-wide system dynamic model, Markle times, E3MC, and they develop their NDC document for the energy sector using these modeling tools. And then last 2 examples are based on developing countries, for example, Thailand and Indonesia. So they also utilize IEP tools, and so they basically use aim and use model while they submitted their NDC document. So there are practical examples that countries are basically developing their NDC documents using IEP tools. However, like we discussed that for Pakistan, there is limited literature on IEP. Also, we lack the bottom-up approach like global studies have, and NDC examples also identified the use of bottom-up approach, and then focus mainly on power sector. And then the most important part is we also lack demand side planning. Our focus is mainly on the supply side planning. Why it is important to focus on the demand side planning? It is not only energy efficiency. It is not only implementing energy efficiency, but also transition. Electricity transition is also important for the demand side planning. So the overall identified research gap presented a systematic approach towards energy planning in Pakistan. So these are my
research questions for my research project in PhD. So what are the projected energy demand and supply scenario across key demand sector, for example, residential, transport sector, etc. by 2030 and 2050 under low, normal and high economic growth conditions in Pakistan. So this is basically business as usual scenario. It is important to develop business as usual scenario because when we develop the what if analysis, so we need to understand what is the difference between business as usual scenario and what if analysis. So the next two questions are basically what if analysis. So the second question is to develop optimal energy mix, which is basically what's the energy mix needed to meet energy demand by 2030 and 2050 with constraints on environmental and resource utilization restrictions. And the third question is basically for the demand side. So what are the potential mitigation measures? For example, energy efficiency measure, energy transition and demand side management in Pakistan for reducing carbon emissions and air pollutants in Pakistan. And the last question is what is the role of coal phase down and carbon capture strategies to meet NDC and net zero target? Because when we are talking about net zero emission target, it is important to discuss role of carbon capture strategies as well. So this is my conceptual framework. It has 3 steps. So first step is to develop energy demand using bottom-up approach for each sector. And then this demand will be a input model for the main model, which is energy technology model. I'm going to use aim and use model. So aim and use model is also based on CGE model like Markle times. So it will provide me different scenarios like I discussed in my research questions. The methodology is like first to develop the energy demand model, which will be like an input for the aim and use model, and the supply side is like energy technology model is based on optimization tool, which is aim and use model. So this approach is, this methodology is also verified by the NDC synthesis report that 46% of parties express mitigation targets as compared to their business as usual levels. So these scenarios based on historical data and projections, this proposed methodology is consistent with various quantitative approach of those parties. So let's talk about the practical example from the residential sector. So there are 2 key objectives initially. First is estimation of energy balance table for the residential sector in Pakistan. So the energy balance table was estimated to analyze the end use of energy consumption. What is end use? Like use of various fuels such as electricity, natural gas, LPG, and biomass fuels as well for various energy services like cooking, lighting, space cooling, space and water heating, and electrical appliances. And secondly, to examine the correlation of energy consumption in the residential sector with the key parameters such as GDP per capita, population, household size, urbanization rate, and other related parameters. So here is a framework for the residential sector. We have different fuel types like electricity, gas, LPG, kerosene, and biomass. Then there are different technologies. For example, for lighting, we use tube light, CFL, energy saver, etc. So it provides us energy service in terms of lighting. And so on. For example, for space cooling, we have AC, cooler, fan, etc. So there are different technologies and it provides different services. So through this framework, we have different energy. We have like key energy sources like electricity, natural gas, LPG, firewood, dung, etc. And then we have energy services, cooking, lighting, space cooling, space heating, and water heating. And then other electrical appliances also distributed in terms of major and minor appliances. So the first objective was to estimate the energy balance table. How to estimate the energy balance table? Basically, I need to use micro data set of the household integrated economic survey because it provides household energy and technology use. And the sample size is about 24,000, around 25,000. And then using this highest, it provides coefficients. And then those coefficients were
calibrated with the macro data to verify that the developed energy balance table is closely with the national statistics as well for the verification or validation process. I'm not going to talk about a lot for this methodology, but I will just give you brief overview of some of the model equations that were quite important, but it has like a separate presentation for this development of the residential sector energy balance table. So for example, I utilize household energy consumption from the highest, and then I also utilize data on household technology use. Basically, it provides average number of appliances mean different appliances like fan, cooling fan, AC, air cooler, tube lights, etc. And then I utilize three methods. First is for the electricity, because please remember this technology use can only provide us the estimation of electricity and natural gas, but it cannot provide for the other fuels, because other fuels we don't have any proper technology in Pakistan. We use like a mud stoves, or we use like a local devices. So these are the three. So for first two, I utilize the technology model, and this is basically mixed of econometric and engineering approach. But the third one is purely econometric approach, for which I use regression model, and there are several studies they utilize regression model for this kind of development of energy balance table. And then I also calculate emissions for the base year energy based on the base year energy balance table. Let me acknowledge one thing here, that in 2007 we developed the residential energy balance table, and it was led by the Dr. Tanzil. He is one of the prominent, and he is one of the capable researcher, and I also learned a lot of things from him. So his PhD about residential energy balance table and residential modeling. So the first effort was made in 2007, but there are a lot of things changed over the period. So we need a fresh energy balance table. So I developed this energy balance table based on 2020, because latest highest is available in 2019. It should be available by 2022, but there are some reasons, so it is not available by the Pakistan Bureau of Statistics, although they are working for the new one, and it will be published in 2026. So I cannot wait for 2026 for the new base year, because this is my graduation time. So I utilize 2020 as a base year for the residential sector. So this is the first look of the energy balance table based on the 2020. We can see that cooking is the major energy source. Cooking utilize almost 74%, or based on this 74% firewood. And then there are different fuels. I will talk about these things later on, but we can see one thing from the commercial energy table like HDPI. Our total final energy consumption is around 55 million ton of oil equivalent, and for that 12 million ton, almost 12.8 million ton is from the residential sector. But when we add biomass, the statistics completely change. So only residential sector is, after adding biomass, it is around 45 million ton of oil equivalent. Then this energy balance table was not only developed for the overall national statistics like for Pakistan, but I also developed it for the rural and urban, because energy consumption pattern vary across rural and urban areas for various energy services. For the left side graph, it is like in terms of quantity, but we can understand the consumption pattern in the right side graph, where the percentage is given, and we can clearly see that in rural area, firewood and biomass fuels are dominant for the cooking. But if we compare with the urban area, natural gas is the major source in the urban area. But still in urban area, we use firewood and biomass fuel for cooking. And then there are, so lighting, we can see the lighting as well. Kerosene is still using for the lighting in rural area. But in urban area, the use is very minimum now. So this is the base year
energy balance table. It was my first effort. So I also examined some relationship with the GDP. So GDP, I estimated GDP using some assumptions with GDP rural and GDP urban per capita as well. So energy transition we can see when we move from rural to urban area, but in rural area consumption is mainly based on the biomass fuel. So GDP per capita is higher in urban area where household consume more electricity and natural gas compared to the rural areas. But in rural area primarily rely on biomass fuel, particularly for cooking. Okay, this graph is very interesting. The number of people per household in urban area is about 7% smaller than in rural areas. But energy consumption per person, such as electricity and natural gas in urban area is larger than in rural. For example, 45%, 80% for space cooling, cooking, etc. Space cooling and cooking respectively. So energy consumption per household in urban area is larger by 48% and 80% for electricity and natural gas. Okay. After developing this energy balance table, I also developed the emission inventory, not only for the fuel, but also by the services based on this energy balance table. So we can clearly see that on the left side graph, this is comparison between emissions from GHG and black carbon. For air pollutants, I took two major pollutants like black carbon and sulfur dioxide. So we can see that in rural areas, air pollutant like black carbon and sulfur dioxide higher because major air pollutants are basically from the biomass fuels. But GHG emissions are higher in terms of indirect emissions from the electricity and then natural gas as well. So in order to achieve decarbonization and air quality improvement in Pakistan, the future challenge will be to simultaneously promote energy transition to modern energy in household and also energy shift to clean energy in the power generation sector. And then we can also see that urban areas consumption is higher compared to the per capita consumption is higher compared to the rural areas. Okay, so that was my first task to develop the energy balance table for the 2020. And these up to this, I already submitted these two papers for the publication. So yesterday I got first publication for the first half of my research proposal. And then this second paper will be submitted by next month, early next month. After that, the challenge was to develop the energy balance table for the time series. Why time series? Because we need data for our aim and use model as a forecasting, based on forecasting. So we need time series assessment of these. And then we are not going to forecast by the fuel, like what is the forecast of the electricity. We are not going to forecast by the fuel, but we are going to forecast by the energy services. For example, what will be like for energy consumption for cooking, heating. So there are different services. So then I started developing the time series energy balance table. First energy balance table was difficult somehow because it took a lot of time for the understanding, and then we also lack different data. For example, like HIS only provide number of appliances, but it doesn't provide technology data. So there are different constraints when I started this energy balance table. But now I'm working on time series assessment. So these are not like a final slide. So, but I thought I should show you. So basically this is also based on HIS starting with 1998 and then HIS in between, like because we have like a one-time HIS and then other year, next year is like a PSLM data. So, but for my case, I use HIS, which is more appropriate for developing this energy balance table. So we have like a 7 points data starting from 1999, and I'm still working on it, but
here are few time series assessment for per capita energy consumption for example, this is for cooking. So we can see there is a shift of different energy sources in rural and urban area. So this is, for example, for the lighting, and we can see that lighting per capita energy consumption decrease over the period, which is mainly due to energy efficiency in the lighting. And then there is a minimum use of we are still using kerosene oil, but over the period, the use of kerosene oil also decreased. Then this is like for space heating. In space heating, in recent year, we have one major shift especially in urban areas, that we are utilizing in electricity now. There are certain reasons. One of the major reason is gas load shedding. So households are using electricity, especially for space and water heating as well. And then space cooling is mainly based on electricity. So I'm still working on this time series assessment, and I hope I will able to complete it by next month. So what are the next steps? So next step is, after developing this time series energy balance table, we recognize different energy consumption pattern in urban and rural area, which is crucial for our basic understanding. So it provides us basic understanding that we need to develop a policy as well, where we need to take care of the urban and rural planning as well for this kind of IP implementation. Then energy consumption correlated with GDP, urbanization, household size. However, energy intensity varies for rural and urban areas. So these analyses will help to develop residential sector model for urban and rural areas, enabling in-depth assessment of the policy scenarios for the residential sector. And next step is to, after developing this energy demand and technology model, I will able to address all the required research questions from the residential sector. So using or utilizing bottom-up model, it is very time-taking in terms of data development. So from last 6 months, I'm only working on this kind of data development for the energy balance table. But at the same time, it is important. Once we set up this energy balance table, we understand the bottom-up approach, it will provide us more appropriate or in-depth assessment of the policy scenario. So for my PhD research project, I am currently focusing on residential and transport sector. And later on, I will also continue, or I will try to develop using this bottom-up approach for the other sectors as well. So what is the significance of this study? First thing, IEP framework for Pakistan is important to enable policymakers to understand various scenarios analysis to meet NDC and net zero targets. It is not only for energy security, but also linkages with the climate action plan as well. So clean energy transition, electrification, climate action plans will drive sustainable growth while mitigating climate change and air pollution. And this study also considers gender issues by promoting electrification, particularly for cooking to empower women, because women are more affected by the use of biomass fuel. So it will ultimately improve their health and significantly reduce indoor air pollutions. So this is overall my presentation. These are the references I use, and thank you. Thank you so much, Saab. I think extremely important, insightful, especially given someone जिसने खुद थोड़ा residential sector के ऊपर काफी try की है. जी, Amna, I'll come to you shortly. Again, very, I think 2 साल पहले, बल्कि 3 साल हो चुके, 2021, SDPI, Ministry of Energy में PPIB in sort of support from UNESCAP, हम लोगों ने एक कोशिश की, एक नॉट एन इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान पूरा, बट एक लीप के ऊपर पूरा हम डिमांड सप्लाई एनालिसिस करके पाकिस्तान का SDG 7 रोड मैप डेवलप कर लें, जिसमें थोड़ी डिमांड साइड भी आ जाए, हमारे पास सप्लाई साइड भी आ जाए. बट वही आपकी बात के कुछ मेजर चैलेंजेस की बात करूं तो स्पेशली जहां डेटा की बात आ जाए तो रेजिडेंशियल इज वन ऑफ द वेरी की वो मुश्किल सेक्टर, स्पेशली जहां हमारा नॉन कमर्शियल इतना है. हमारे पास रूरल सेक्टर्स में जाएं तो वो
ड्राइवर्स क्या रख रहे हैं, वहां पे भी कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो इट बिकम्स चैलेंजिंग। एंड वेरी ऑनेस्टली उस टाइम भी हम लोगों ने जो काफी डेटा सेट्स को थोड़ा प्रोजेक्ट उसी डेटा से किया जो डॉक्टर तंजील ने डेवलप किया था बैक इन 2007। कुछ वो बिल्कुल हाउस होल्ड सर्वे के थ्रू आपके जो HIP वाले हैं उनसे मिल जाता है, बट या वो इट्स रियली इंटरेस्टिंग इफ समथिंग यहाँ से अगर निकल के आ जाए तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान ऑल्दो चले अभी उस डॉक्यूमेंट में जाना इनपुट्स आर डिफिकल्ट, स्पेशली जो क्योंकि NDCs हमारे इस दफा वाले तो एक आध महीने में सबमिट हो जाएंगे, बट आई बिलीव आप जो इसकी फॉलो अप इटरेशंस होती हैं उसके अंदर इफ दे इज समथिंग जहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मल बॉटम अप मॉडल बन जाए तो यहाँ से वी कैन हमारे काफी मसले वो हल हो जाएंगे, जहाँ हम प्रोजेक्शंस पे लड़ाई करते रहते हैं कि GDP का इतना शेयर होना चाहिए, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जी। बट आई थिंक बिफोर मेरे वो आए, बट इट्स ओपन फॉर क्वेश्चंस अगर जिनके आई थिंक हम पहले उमेर आमना ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से का स्टार्ट कर लेते, तो उमेर आमना आप ऑनलाइन इन्हें अलाउ कर दें टू सॉर्ट ऑफ स्पीक। आमना, आई होप यू आर विद अस। मैंने आमना को कहा भी फर्स्टली इसलिए बिकॉज आमना हैज बीन वर्किंग, आमना इज रिसर्चर एट प्राइड। जी आमना है अस्सलाम वालेकुम। ऑन द रेजिडेंशियल सेक्टर मिनी माइक्रोग्रिड साइट के ऊपर भी। तो जी आमना, ओवर टू यू। थैंक जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम आमना शहाब, आई एम अ रिसर्च एसोसिएट एट प्राइड। आवाज़ आ रही है? यू। जी जी आमना, आपकी आवाज आ रही है? जी थोड़ा सा आई loud हैव बस। मैंने इसी थोड़े से यही जो थीमेटिक एरिया इन्होंने डिस्कस किया है, इसमें काम किया हुआ है E3MC अपने थीसिस में। मैं पूछना चाहती थी कि E3MC मॉडल और AIM मॉडल जो है, जो अभी इन्होंने भी सारा बताया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट या थोड़ा सा डिफरेंस को डिस्कस कर लें अगर, या थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि मेनली क्या उसमें डिफरेंस है। और सेकेंडली जो नेट ज़ीरो एनर्जी परफॉर्मेंस है, उसको अगर हम इस फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करें तो उसका एक किस किस्म का रिज़ल्ट हम मतलब आ सकता है हमें, एक उस चीज़ का भी था। और अगर हम इसमें रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेट करते हैं घर में, या ऑफ ग्रिड या स्टैंड लोन करते हैं, और ये जो कुकिंग और जितनी भी ये जो चीज़ें हो रही हैं, अगर इसको हम ट्रांजिशन कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाई कर दें कुकिंग को और उस सब को, तो तब क्या एस्पेक्ट्स होंगे? तो आई एम अ बिट क्यूरियस टू नो। थैंक यू। जी थैंक यू। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ले लेते हैं फिर विल कम टू साथ साथ। तो उमर जी प्लीज। जी इस्लाम सर। सर मेरा क्वेश्चन है डिमांड साइड मैनेजमेंट के वाले से। तो उसके लिए लेट्स से अगर हमारे पास डिमांड का पैटर्न मेगावाट्स में सिस्टम में इंजेक्ट होता है, तो उसके लिए हमारे पास कंसेक्टिव पीक्स और कंसेक्टिव नॉन पीक्स आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम उसकी कैसे पीक शेविंग या पीक क्लिपिंग कर सकते हैं, या फिर डिमांड साइड मैनेजमेंट के जो अगले प्रोसेस हैं जैसे शिफ्टिंग को, जो हमारे जो कंसेक्टिव पीक्स हैं उसको हम शिफ्ट कर दें जो कंसेक्टिव नॉन पीक्स हैं, और प्लस उसके साथ जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज की जो कंस्ट्रेंट्स, उसको कैसे अलाउ करते हैं। बिकॉज डाटा हमारे पास जो होता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा सेट्स होते हैं, बट जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स का जो डाटा होता है वो तो हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्मेट में होते हैं। सो इसके लिए कौन सी मॉडलिंग रिक्वायर्ड है? थैंक यू उमर। मेरे ख्याल से साथ साथ ओके, सो आमना, आपका पहला क्वेश्चन था कि E3MC और एम एंड यूज मॉडल में क्या डिफरेंस है। आई डोंट थिंक सो कि दोनों मॉडल्स में कोई ऐसा डिफरेंस है। अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो अल्टीमेट गोल है वो NDC और नेट जीरो मिशन के टारगेट्स को लेके हमने कुछ सिनेरियोस डेवलप करने हैं। Both models are equally good. Why I'm using aim and use model? Because I have some background in using CGE models like Markle times. So aim and use model is very close to like a Markle time. So in 2007, I was part of Markle times, but aim and use model is comparatively better because it is like a recursive model. So recursive model, like, it provides robust analysis compared to the Markle times. And then it also helped me with the data side as well, because E3M model के लिए, okay, I initially did some literature review that what type of model is more appropriate. So for my understanding, aim and use model is more appropriate with the required data constraints. So that is why I selected this aim and use model. And the most important point is it is also recognized by the IPCC. So there are some motivation that to use this aim and use model.
And one of the most important part is my supervisor is also like, he is more convenient with the aim and use model. So these are like a major reasons. But the point is here, all the IP modeling tools have different pros and cons. We cannot say this model is perfect, this model is not perfect. But what is most important thing, we need to use these kind of IP tools. Once we develop these type of modeling tools, then we can improve and we can make a mixture of different modeling tools. Maybe aim and use model is more appropriate for residential sector, but not good for the transport sector. So we can utilize model by sector as well. So at this point, for me, aim and use model is more appropriate. अच्छा, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो आपने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रीफाइंग के क्या इम्पैक्ट होंगे. सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. Inshallah, when I develop those scenarios, I will request SDPI again to continue this series of discussion, and then I will present the results. So I cannot say what will be result because it is not my job to just give some sweeping statements. What will be like so we need to develop appropriate models, and then we need to rely on the results of model. What is our job? हमारा काम ये है कि हम मॉडल करते हुए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसमें कोशिश करें कि जो डेटा इनपुट है वो जितना अप्रोप्रिएट हो, उसमें एरर जितना मिनिमाइज हो सके. तो देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये इलेक्ट्रीफाइंग के क्या रिजल्ट्स हैं. लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा, वो ये है कि जो मिशन इन्वेंट्रीज हमने डेवलप की है ना 2020 की, उसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इनडायरेक्ट आपकी एमिशंस हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी यूज से और देन नेचुरल गैस यूज से, उससे जीएचजी एमिशंस हमारी अर्बन एरियाज में कंपैरेटिवली हाई हैं कंपेयर टू रूरल एरिया, विच इज अंडरस्टैंडेबल कि जीएचजी एमिशंस मेनली राइज फ्रॉम द पावर सेक्टर, बट एयर पोल्यूटेंट्स आर हाई इन द अर्बन एरिया, रूरल एरिया. सो अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली हम एयर पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी नीड डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी इन पावर सेक्टर एज वेल. So at this point, I'm not able to answer your second question appropriately, but what I can foresee that it seems that we need energy transition, electricity transition, but we also need decarbonization policy in power sector as well. That is why the last question is about coal phase down and carbon capture strategies, which is important to achieve net zero emission target. So net zero emission target is basically based on power sector decarbonization. So I think these are the brief answer of your questions. And sir, जो आपका question है, first of all, let me tell you very clearly, I'm not electrical engineer. I'm energy modeler. My background is basically econometrics, economics, energy economics, but I can answer your question as well. सर, हमारी जितनी भी प्लानिंग है, इवन आईजी सैप में भी, वो हमने पीक डिमांड पे की हुई है. हम एक घर के एसी की डिमांड पूरी करने के लिए एनर्जी प्लानिंग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की. मैं यहाँ पे कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहता जिससे थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन टेक्निकली मैं ये जो पीक डिमांड की बेसिस पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी की फोरकास्ट कर रहे हैं, आई डोंट बाय दिस. ठीक है, बट व्हाट वी कैन डू, हमें एक चीज जो एनर्जी ट्रांजिशन या इलेक्ट्रिफिकेशन से हासिल होगी वो ये है कि हमारा समर और विंटर का जो इलेक्ट्रिसिटी गैप है वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे हम उस गैप को रिड्यूस करेंगे. उसकी एक एग्जांपल ये है कि आप अगर उसको देख लें, समर के पीक को और विंटर की, वो ऑलमोस्ट आपका डबल गैप है. तो जब आप इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिफिकेशन से आप सिर्फ ये, एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमें चाहिए कहाँ पे. हमारी समर की जो डिमांड है उसके लिए ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं स्पेस कूलिंग की सेंस में, लेकिन हमें इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए स्पेस हीटिंग के लिए, वाटर हीटिंग के लिए. बैक इन 2022 हमने नेचुरल गैस पॉलिसी एनालिसिस एक रिपोर्ट डेवलप की थी ईपीआरसी में, प्लानिंग कमीशन के फोरम से. वो रिपोर्ट जो है उसमें हमने मंथली कंजम्पशन देखी थी गैस की. उसमें जो हमारा विंटर गैप है वो ऑलमोस्ट हमारा डबल हो जाता है समर के एवरेज गैप से.
तो उस टाइम पे हमारा पीक डिमांड जो है गैस सेक्टर की वो मेनली स्पेस हीटिंग और वाटर हीटिंग की वजह से। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज बहुत मिनिमम है, तो हमें नई डिमांड, उस डिमांड की बेस पे नए पावर प्लांट्स नहीं चाहिए होंगे, बल्कि वो हमारी वेल मैनेज हो रही होगी उस टाइम पे विंटर के में। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन जो हमें चाहिए वो मेनली इन के लिए चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने बारहा वो विंटर टैरिफ इंट्रोड्यूस किए कि ताकि क्लाइंट जो है वो शिफ्ट हो, हमारा कस्टमर जो है वो शिफ्ट हो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। तो आई डोंट थिंक सो आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बट नहीं, मेरी ये all- थॉट्स yeah, हैं जो मैंने yeah, आपको thank बताई you. हैं। जी ahad साहब, कमिंग टू यू। अच्छा, ये इकोनोमेट्रिक्स है तो थोड़ा सा हम सोच सकते हैं थोड़े से और सिनारियोज बनाने का, बट आई थिंक शायद आपके वो पीएचडी के स्कोप में ना हो, लेकिन वो बाद में हम कर सकते हैं। एक सिनारियो मेरे जहन में जो आ रहा था वो डेवलपमेंट ऑफ एसईजीज का है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट करेगा मेनली, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का। बट आई थिंक इस तरह के सिनारियोज, या फॉर एग्जांपल अभी हम कुकिंग के ऊपर भी कुछ काम करने वाले हैं, तो उसके जो सिनारियोज बनेंगे वो आई थिंक इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ सजेशन है, आपका तो काम कंप्लीट है, पीएचडी आपकी हो गई है, लेकिन जो है ना, ये आई थिंक वो काम है जो हम आपके काम को आगे लेके हम लोग चल सकते हैं जिस पे। दूसरा एक मेरा ख्याल है कि कंट्रोल वेरिएबल्स में अगर इनकम ग्रुप को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो शायद हमें थोड़ा सा डिफरेंस दे सके, स्पेशली जो एक एक नया नैरेटिव जो ये बना है कि सोलर अपटेक जो है वो आपकी जो अपर और अपर मिडल इनकम ग्रुप है उसमें ज़्यादा हुई है। तो उनकी अगर डिमांड कम हुई है वो कहीं पे हमें नजर आए कोई, वो चीज़ भी आई थिंक थोड़ी सी देखी जा सकती है। सिर्फ वाइल्ड थॉट्स हैं, कोई वो नहीं। तो ये दो तीन मेरी सजेशंस थी। जी थैंक यू। आई थिंक जैनब फिर सर आप पे भी आ जाता हूँ। जैनब। Firstly, thank you so much for such a wonderful, insightful presentation. अभी आपने जो एनालिसिस की बात की नेचुरल गैस रिलेटेड, आई डिड अ सिमिलर एनालिसिस इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस अप्लायंसेस। तो उसमें एनर्जी प्लानिंग तो प्रॉपरली हमने केटर किया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और कितनी नेचुरल गैस सेविंग पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिफिकेशन से। बट व्हाट आई बिलीव नाउ सी इज दैट कि जो मिसिंग पार्ट था उसमें वो था क्लाइमेट एक्शन से लिंक करना, कि कितना जो है वो उसमें एमिशन सेविंग या इस तरह। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमें कौन से इनपुट्स उसमें एडिशनली उस एनालिसिस में ऐड करने होंगे। और सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने बात की कि आप एक एनर्जी ट्रेड बैलेंस टेबल बना रहे हैं, तो उसमें सीजनल वेरिएशंस को लिंक करने के लिए कौन से इनपुट्स को आप देख रहे होंगे? एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न्स बेसिकली किस तरह उस चीज को एड्रेस करें? ओके, थैंक यू, बोथ क्वेश्चंस आर वेरी गुड। अच्छा, पहले तो आज साहब ये है ना कि जो मेरा पीएचडी का स्कोप है वो मेन रेजिडेंशियल और ट्रांसपोर्ट पे है, क्योंकि आई हैव टू कंप्लीट दिस विद इन 3 years। ठीक है, लाइक आई सेड, I'm looking forward for working on industrial sector as well in my post PhD, and कहीं ना कहीं मेरे सुपरवाइजर से भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि I will work on industrial sector as well. Actually, when I developed this project, I was not looking for the bottom-up approach, but somehow after detailed discussion with my supervisor, we come up this bottom-up approach, which is more difficult in terms of data development. And then, fairly speaking, we lack data, not only like even in our government sector, we lack this kind of data. सो कल मैंने प्लानिंग में प्रेजेंटेशन दी है तो वहां पे भी यही डिस्कशन हो रही थी कि ये डेटा सेट्स हमारे पास कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो अब इसमें जो मेरा मेन काम है वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ डेटा साइड पे काम कर रहा हूँ, विच इज इम्पोर्टेंट एज वेल कि ये एक बेस सेट करेगा। बट लाइक यू सेड कि ये इकोनॉमिक जोन्स के लिए तो दिस विल बी इन, लेकिन हमने आउटलुक रिपोर्ट जो की थी पीआरसी में उसमें हमने ये इकोनॉमिक जोन्स और इन चीज़ों को हमने उस टाइम पे किया था। सेकंड, जो इनकम ग्रोथ की आपकी बात है ना, आई कम्प्लीटली एग्री। तो बेसिकली जो जीडीपी, जब हम मॉडलिंग कर रहे हैं ना सर, जो जीडीपी पर कैपिटा है ना वो बेसिकली उस चीज़ को कवर कर रहा है। ठीक है, वो एक टेक्निकल डिस्कशन काफी डिटेल में हो जाएगी, लेकिन वो उसको कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा है। अच्छा, दूसरा जो आपका पॉइंट है ना, देखें जो हमने गैस की रिपोर्ट की थी उसमें भी हमने यही बताया था कि एक तो पाकिस्तान में गैस हमारी ऑलरेडी डिप्लीट हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जब हमने एलएनजी पे गए हैं तो वो एलएनजी हमारे लिए वायबल नहीं है स्टिल। हम वो जो सर्कुलर डेट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था, अब हम उसी सर्कुलर डेट गैस के भी कहीं ना कहीं आ गए हैं। अच्छा, उसमें जो हमने जो उस टाइम पे काम किया, जो हमने
गैस की फोरकास्ट डेवलप की, उसका बड़ा सिंपल है कि हमें एमिशन फैक्टर्स के साथ एक सिनेरियो डेवलप करना है क्लाइमेट का। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं मेरे उस काम में उस टाइम पे लैग कर रहा था। तो मैं लाइटर साइड पे ये कहता हूँ कि जो मैं अभी पीएचडी में कर रहा हूँ, ये सिर्फ पीएचडी नहीं है, जो मेरी पास मिस्टेक्स हैं उनको भी मैं कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। तो ये एक मेरी इंपॉर्टेंट लिंकेजेस है जो क्लाइमेट साइड के, तो ऑब्वियसली वो उसमें मिसिंग फैक्टर था। और इसके अलावा जो आपने एनर्जी बैलेंस टेबल का जो आपने पूछा है, उसमें एनर्जी बैलेंस टेबल में आपका, सॉरी कैन यू रिपीट? हाँ, सीजनल वेरिएशन, सॉरी। अच्छा, सीजनल वेरिएशन ये है कि जब हम मॉडल को डेवलप करेंगे ना, ये लीप में भी इसी तरह ही है, उबैद को इस चीज का आइडिया, तो हम उसमें वो डेली का जो है ना एक वो उसमें ऐड कर लेते हैं। तो सेम एम एंड यूज मॉडल भी हमें वो प्रोवाइड करता है कि हम मॉडल डेवलप करने के बाद उसकी सीजनल, वैसे हमने जो ईपीआरसी में सेकंड रिपोर्ट की थी ना, वो सीजनल वेरिएशन पे थी। आपके लास्ट 20 ईयर से ना जो हमारी सीजनल वेरिएशन है ना, वो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, लाइक पैटर्न सेम है, विंटर और समर में पैटर्न सेम है, उसमें कोई ऐसा जितनी शिफ्ट नहीं आई। तो वही सीजनल पैटर्न हम अप्लाई कर सकते हैं जो एंड रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी वेरिएशन उसमें एग्जिस्ट करेगी। थैंक यू। थैंक यू जी सर। थैंक यू वेरी मच। मेरे सवाल जो है ना वो कुछ लिंक है पेरिस एग्रीमेंट से या पाकिस्तान के हवाले से। एक तो सर ये कि यूएस बीइंग मेजर कंट्रीब्यूटर इन जीएचसी, they never rectified Kyoto Protocol and they are backed off Paris Agreement now as a information are there. So what are the challenges for Pakistan as or the other world? दूसरा सवाल जो पाकिस्तान के हवाले से है कि एक साइड पे हम क्लीन एनर्जी की तरफ एफर्ट कर रहे हैं और फिर दूसरा फॉसल फ्यूल्स का वो भी हमने साइन कर लिया कि हम वो रिड्यूस करेंगे। मीनवाइल हम वो कोल एनर्जी को भी प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली सिंध में है या साहिवाल में है, और ये सीपैक के अंडर भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ख्याल है कि वो कुछ कोल एनर्जी के वो सेटअप्स वो बनेंगे। तो एक साइड पे से हम दो चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं कि वो रिड्यूस हो जाएं और हमारा जो है नेट जीरो एनर्जी वो 2030 तक अचीव भी हो। दूसरी साइड पे फॉसल फ्यूल्स को भी प्रमोशन हो रही है। सो how we can adjust or accommodate all that. थैंक यू जी। और अच्छा, अगेन एक क्विक सजेशन आप साथ पे ये है कि वो हाथ साहब ने भी मेंशन कर दिया कि आप इस साल होपफुली हम स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल या वो लेट यू नो द डेट कि हम लोग आप थोड़ा डिटेल में खैबर पख्तूनख्वा की क्लीन कुकिंग पॉलिसी रोड मैप के ऊपर एक काम करेंगे, विच इज़ ऑल्सो लिंक जो हमारा SDG 7 की एक रिकमेंडेशन थी, जिसमें हम होपफुली इंशाल्लाह इन डेप्थ में फील्ड में जाकर थोड़ा डाटा वगैरह इसकी मॉडलिंग वगैरह करेंगे। तो परहैप्स एक पॉसिबिलिटी इसकी आप थोड़ी क्या कहते हैं हमारी साइड से भी, इफ़ यू नीड एनी डाटा या डिफरेंट अप्रोच, तो परहैप्स वहाँ एक देयर इज अ पोटेंशियल कि हम लोग एक वी कैन डू अ बिट ऑफ कोलैबोरेशन एज वेल। सेकेंडली, एक जो ट्रेंड आजकल वैसे भी वो आपने देखा होगा जो बहुत तेज आ रहा है, स्पेशली रेजिडेंशियल सेक्टर के साथ भी लिंक करता है, वो नॉन कमर्शियल बायोमास की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो एक बिल्कुल इंटायरली ऑफ ग्रिड नॉट नेट मीटर्ड सोलर पीवी का जो एक रैपिड ऑफ टेक है, वो सच अ लार्ज क्वांटम, स्पेशली इतनी क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहे हैं। हमारे पास लास्ट ईयर के फिगर्स देख लें तो रफली इंपोर्ट फिगर्स आर 1/3 ऑफ द टोटल कैपेसिटी, वो 16 गीगावाट तक गए हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसे मेरे ख्याल से क्योंकि हम लोगों की वेरी ऑनेस्टली हमारी भी जो पिछली मॉडलिंग्स होती रही हैं, हम इस ट्रेंड को, ये जो एक मैसिव सोलर पीवी का अपटेक है, इसे सिविल सोसाइटी भी कई एंगल्स पे मिस कर गई थी, इतना एक्सपेक्ट हुआ नहीं। तो ये एक मुझे लगता है कि पर्सनली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो कि अगर इस मॉडल के अंदर किसी तरह से इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट हो, या अगर आप उस चीज को आप करने का सोच रहे हैं। बाकी इफ देयर इज एनी अदर If you allow क्वेश्चन। me one more thing, जी जी, वेरी time is there. हम ये कोशिश सारी कर रहे हैं ना एनर्जी, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या डोमेस्टिक सेक्टर है, बट वन थिंग इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वो लैंड यूज को भी, एनर्जी सेक्टर को भी, वेदर इट इज ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक और व्हाट, उस सारे को बहुत ड्रास्टिकली जो है वो अफेक्ट कर रहा है। मतलब वाटर टेबल आप टेक्निकल लोग आप बेहतर जानते हैं, स्पेशली इन पंजाब और थैंक यू। तो इस सारी चीजों को हम वो उसके साथ वो कैसे लाइक
आप एनर्जी सेक्टर में बैलेंस या लाने की कोशिश करो तो लैंड यूज और पॉपुलेशन जो है उसको सारा डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी अच्छा, नहीं थैंक यू। किसी का और आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? जी प्लीज, लास्ट वन। It was very good presentation. Sir, obviously directly जो आपका PhD का टॉपिक, मेरी सर PhD इन्वायरमेंट साइंसेज में नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, तो अभी करंटली जिस समय मैं NDMA के अंदर काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो मिसिंग पार्ट जिसको आप क्लेम कर रहे हैं बीइंग एप्लीकेशंस के तौर जिसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके तो बहुत सारे वैलिड क्वेश्चंस बनते हैं, बट ऑब्वियसली आपका एक रिसर्च फोकस और रिसर्च एरिया आई कैन अंडरस्टैंड, बट जैसे क्लाइमेट की मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। और दूसरा ऑब्वियसली एयर क्वालिटी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप रेजिडेंशियल या उसको ट्रांसपोर्ट को बात कर रहे हैं, तो स्मोक इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। फिर उसके साथ जिस तरह क्लाइमेट सर्ज हो रहा है और आपका जिस तरह विंटर वेरिएशन की या सीजनल वेरिएशन की बात हो रही है, तो आपके विंटर श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि अगर आपके डिजास्टर के पहले आने की जो रेशियो थी वो अगर लेट्स सपोज 5 ईयर्स के बाद आ रहे थे या 10 ईयर्स के बाद आ रहे थे, तो अभी 1 ईयर्स के अंदर ही आपको थ्रू द वर्ल्ड आपको क्लाइमेट सर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा डिजास्टर फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ से एनर्जी और उसकी बात जा रही है, तो उसका नेट जीरो को कैसे पॉसिबल किया जा सकता है, फिर कार्बन क्रेडिट्स को कैसे आप कर सकते हैं, फिर सोलर एनर्जी को, जिस तरह सोलर के ऊपर बहुत ज़्यादा हम जा रहे हैं, ठीक है। फिर जिस तरह के आपकी डिवीजन जो जो एनर्जी कंजप्शन का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी जितने लैप्सेस हैं ना, वो आप कैलकुलेशंस आपकी वेरी करेंगी, ठीक है। अगर आप उसको प्रीवियस पैटर्न के तौर के ऊपर ही कैलकुलेट करते जा रहे हैं, जैसे कि हमारे समर और विंटर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिफरेंसेस आएंगे, तो इसलिए हम पॉलिसी सही बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेरे एक दो मेजर क्वेश्चन होंगे वो ऑब्वियसली है कि एयर क्वालिटी की आपकी जो उसके ऊपर है, डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन है। आपके पंजाब के पास कितने वो सेंसर हैं, या आपके इवन फेडरल के अंदर इस्लामाबाद इवन वन ऑफ दोज के बेस्ट उसके अंदर आता था कैपिटल, बट अभी उसकी भी एयर क्वालिटी आपने खुद देखी है क्या है। तो इसकी थोड़ी सी लिंकेजेस थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी है कि आपका एक साइड डाटा सेट जो कि अभी आपने खुद बताया भी कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपका फोकस वो ही रहा है, बट आपके टॉपिक के ऊपर अगर आप टाइटल की बात करें तो इट वाज टोटली मिस आउट, उसमें वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही जिस तरीके से आप क्लेम कर रहे हैं। दिस इज माई माइट बीन रॉन्ग। तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। तो पहले सर जो आपके क्वेश्चन है ना, पाकिस्तान की क्या चैलेंजेस है? ऑब्वियसली पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन में हम कहीं ना कहीं डेडलॉक सिचुएशन में हैं। लाइक अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों को चीज़ों को साबित करना पॉलिसी साइंस के लिए, और जिस तरह आपने कहा ना फोसिल फ्यूल सी रिडक्शन को कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखनी है, लेकिन एक डिटेल डिस्कशन ये है कि एट सम पॉइंट वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी जो था हम उसको यूज करते थे इसलिए कि ये एनवायरनमेंट के लिए या क्लीन एनर्जी के लिए, लेकिन राइट नाउ वो सबसे ज्यादा वायबल है क्योंकि हमारी पावर प्लानिंग लीज कास्ट पे चलती है। तो जो हमारा 2022 का आईजीसेट था उसमें हमने 60% बीआरई शो किया था। एट दैट टाइम हमने उसको सैल इसी तरह किया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, बट मेरा उस टाइम भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम ये लीज कास्ट की वजह से इस पे जा रहे हैं। तो हमारी बेसिकली जो पावर प्लानिंग है वो लीज कास्ट पे बेस करती है। अगर आप रिसेंटली जो हमारे 3-4 आईजीसेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको निकालें, उसमें आपको वेरिएशन नजर आएगी। 2018 में हम प्लान कर रहे थे एलएनजी की बेसिस पे, लेटर ऑन हमने उसको शिफ्ट किया डिफरेंट और सोर्सेज पे क्योंकि हम उसको लीज कास्ट पे देख रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं हमें ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और फिर इसमें एक मेन पार्ट ये है कि हम जब पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स दे रहे हैं अपने एनडीसी पे, वो कमिटमेंट्स कहीं ना कहीं हमारी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक एग्जांपल है, हमने कहा है कि एनडीसी में हम नो न्यू इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट इन 2020, बट आईजी सब 2022 देख लें उसमें हमने पावर प्लान इंपोर्टेड कोल के दिए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? हमारी कनेक्शन मिसिंग है। एनर्जी प्लानर्स के को नहीं पता कि एनडीसी में क्या दिया हुआ, और एनडीसी वालों को ये नहीं पता कि हमने आईजी सेट में क्या शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो जो मेजर चैलेंज है ना मेरी नज़र में वो है कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब हम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को दूर करेंगे, ये इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग इज अ वेरी वास्ट टर्म। ये इसमें सिर्फ प्लानिंग होराइजन की बात नहीं हो रही, इसमें आपकी ये लिंकेजेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा मैं क्विकली जो उबैद आपके जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल मार्ट, अच्छा लेट मी क्लैरिफाई, इसमें आपका भी सर क्वेश्चन आंसर होगा। ये मेरा अभी बिल्कुल स्टार्ट स्टेज पे काम है, कंप्लीट नहीं है,
ठीक है। मैंने I started my PhD in 2023 September. First year was coursework, or proper research work I started in September 2024, like last 6 months ago. तो ये वो है जो मेरी last 6 months की progress है। इसमें जो आपने बात की ना एयर क्वालिटी की, अब मैं यहाँ पे वो स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा एम एंड यूज मॉडल है ना, बेसिकली उसकी जो आउटपुट है वो एक जीएचजी एमिशन और एक एयर क्वालिटी है। अभी तक मैंने अपने रिजल्ट्स मॉडल से कोई रिजल्ट्स नहीं ड्राइव किए। ये एक इनिशियल आप समझ लें कि एक कंसल्टेटिव मीटिंग है। इसमें ऑब्वियसली जो आपके कमेंट्स हैं ये मेरे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। तो जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको प्रेजेंट करूंगा चीजें, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट अगेन। उसमें फिर मैं मॉडल बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं तो वो इंशाल्लाह टाइटल को जो है ना कवर करेगा। क्योंकि जो मॉडल है ना जी, जी जो मॉडल है ना वो बेसिकली डिजाइन ही इसलिए है कि उसने एनर्जी सिक्योरिटी, जीएचजी एमिशन और एयर क्वालिटी, उसने तीनों चीजें हमें देनी है। इसीलिए जो वो फर्स्ट क्वेश्चन था ना आमना का, उसमें भी मैंने उन्हें यही कहा कि जब ये मॉडल से हमें रिजल्ट मिलेंगे, अभी मैं सिर्फ डेटा साइड पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह वेरी क्विकली जो आपका ये ऑपरेट है ना, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने जो सिनेरियो है वो हमने नो रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और उसमें ये जो ऑफ पीक की आप बात कर रहे हैं ये हमारा मेजर फैक्टर है इस टाइम पे सोलर साइड से। तो इट्स पार्ट ऑफ माय रिसर्च क्वेश्चन 2। तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू डू द सीरीज ऑफ दिस सेमिनार विद यू गाइस। उसमें मेरे लिए भी वो बड़ा हेल्पिंग है, आप लोगों से सीखने को मुझे भी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली उसमें जब मेरे रेजिडेंशियल के एनालिसिस होंगे, आई विल एबल टू कंप्लीट बाय जून दिस ईयर जून। तो वी कैन सेट अप अ न्यू सेमिनार इन जून और जुलाई ऑन द जूम, नो प्रॉब्लम। तो उसमें इंशाल्लाह कोशिश होगी ये जो आपके वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। बिल्कुल। बट जो आज का मेन जो थीम था ना वो ये था कि हमें एनर्जी प्लानिंग में जाना किस तरह चाहिए, किस तरह चाहिए। यस, हमारी वो जो क्लाइमेट लिंकेजेस हैं वो मिसिंग है। ठीक है, बस जस्ट आई थिंक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन ऑलरेडी वो है, आई थिंक इट्स हैज बीन आंसर्ड के व्हाई टाइम्स मॉडल इज नॉट यूज्ड फॉर, उस्मान ने पूछा हुआ ऑनलाइन हमारे पास के व्हाई टाइम्स मॉडल इज नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी मॉडलिंग। तो आई थिंक इसका आंसर इज प्रीटी मच जो आपने आमना को वो दिया 3G मॉडल एंड इट्स द difference. बाकी इस पे if you want to add anything in 1 minute because we are a bit already उस्मान साहब, टाइम्स मॉडल मैंने 2007 में यूज किया था। मैं बेसिकली ज्यादा कंफर्टेबल था टाइम्स मॉडल से, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने सुपरवाइजर से भी एक अलाइनमेंट करनी है। और देन एम्स मॉडल मुझे काफी वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो मेरे इस टाइम रिसर्च क्वेश्चंस को कवर कर रही हैं। और दूसरा, रिसर्च क्वेश्चंस बहुत हैं सर, देयर आर टन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, लेकिन मैं वो 3 साल में नहीं कर सकता। स्टिल मेरे लिए ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं ये भी काफी टाइम टेकिंग है। बट एट द सेम टाइम मेरी जो एक कोशिश होगी वो ये है कि ये चीजें बेस प्रोवाइड करें पॉलिसी मेकर्स को, ताकि हम फर्दर इस पे काम कर सकें। मेरी एक कोशिश ये है कि मैं जो ये अपना पीएचडी का काम करूं ये प्रैक्टिकल हो, ये सिर्फ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, इसको कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज कर सकें पॉलिसी मेकिंग के लिए। और देन उसमें जो मेरे पेपर्स हैं उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज डिटेल में प्रोवाइड करूँ ताकि वो फिर आप लोग भी यूज कर सकें। बिल्कुल। तो उसमें फिर फर्दर क्वेश्चंस आप लोग भी एड्रेस करें, मिलके काम करते हैं, अकेला मेरे पे बोझ न डालें। ठीक है, नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली ऑब्वियसली। जी जो रूरल एरिया की आपने बात की ना, क्योंकि मेरा ज्यादा काम का फील्ड है रूरल एरिया डिपार्टमेंट के साथ, तो हमने फ्यूल एफिशिएंट स्टोव पे भी काम करने की कोशिश की है। लोगों का इतना वो फेवरेबल यूज नहीं था और तो मेरा कहना है अल्टरनेटिव एनर्जी जितनी भी है रूरल एरिया में, अब क्योंकि बायोगैस और इलेक्ट्रिक स्टोव है ये डायरेक्टली लिंक टू द फार्मिंग कम्युनिटी, तो दिन ब दिन जो वो जगत भी कम हो रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड हो रही है और लाइफ स्टाइल भी कम हो रही है। अदरवाइज हम लोगों ने 2009 में पहला जो है ना वो बायोगैस का एक छोटा सा प्लांट लगाया था सभी पर। Thank you so much, sir. I think first of all, thank you so much, Satsa, once again for presenting such a wonderful discussion. We really, we are always available if we want to have towards the end. You have the findings. We would really like to host another session. जब it's feasible, but it was again wonderful learning from you, and thank you everyone. आप लोगों के questions, suggestions, and we remain available. जहाँ पे भी we again look forward to learning from you. But जहाँ पे यहाँ से आपको कोई data support, since a lot of us are working at the ground
different fields. Maybe there's a lot of data collection going on different fronts. So if you need any assistance from SDPI, so we're more than happy to support in that context as well. Ji, so I think with this, once again, thank you so much for again such a wonderful session. If I can request Ali Amir Saab to present we actually हमारी SDPI की there is a big रिवायत है. Each year we develop this anthology जो हमारी based upon the year's work हमारे पास कुछ findings and developments होती हैं. And if I can also request Ali Amir Saab to present it as well. Sorry, please. Yeah. If I can request our colleagues to please join us at the front, sir, please.